So hi, good afternoon everybody. This is Vishwajit Datta, Director Success Ed Education Services, Bhopal, Madhya Pradesh. Success Ed Education Services is pioneer in giving education and imparting preparations for all the CLAT aspirants. So before getting into this video, let me tell you that the CLAT 2023 is absolutely done, and based on that, taking certain outlines from CLAT 2023. This is just a trial, in fact, a preparation to help students for 2024, giving them the understanding as to how and what topics you can expect to be a part of the paper and so on. So today you could see that I have designed to make certain understanding. We are going to frame some understanding based on law and online gaming in India. In the paper, in legal section, particularly in 2023, you haven't seen too much of legal jargons. You haven't seen too much of law of torts or too much of law of contract or too much of law of crime associated in the paper. बहुत ही मामूली words use किए थे legal reasoning के तौर पर, and they have taken certain issues, and based on such issues, the paper was actually been made. So today we are, in fact, I'll discuss one of such issue. And based on that, in the next paper, maybe we can come out with certain amount of questions. As you know that the central government, the Union Government of India, framed certain group of people, taking certain ministers, the IT, electronics and IT ministers. They have come together to frame or to make regulations for the law that is associated to online gaming in the country. The government had already decided this fact that we are going to turn, or in fact touch around $1 trillion of digital economy. And at this point of time, you will surprised to know that we have a lot of people into this particular category of business. We call it as online gaming business. In the online gaming business, you will find we have 3 unicorns right now. If you ask me to write down the names of those unicorns, I can do so. One you will find as Dream Sports. Having Dream Sports is a company which is into online gaming, and this company has created a revenue of around 2,700 crores. Sorry, Dream Sports created a revenue of 2,730 crores, somewhere close to that, with a profit of more than 320 crores after tax deduction. This is a great business. There is one more unicorn that I'm writing. We call it as a game 24x7, and this particular company in the digital business of online gaming in India has created a revenue of around 1,600 crore with a profit of around 110 crore after tax deduction. And there is one more company that you know as a name, which is very common because we keep on hearing about these names, MPL in online business, in online gaming. The Internet and the Mobile Association of India has already stated this particular statement that around 900 startups are waiting to come into this field of online business. They are waiting to see what is the central government thinking about this particular business that is online gaming, and how the laws are going to frame on this particular business. There are a lot of investors who are also looking forward to invest money into this business, but they are again looking onto the central government, whether the laws which the central government is going to come out with are they very stringent, or the central government is going to become little more softer into this issue, into this matter of business.
At present, right now in our country, you will be surprised to know that more than 15 to 20,000 developers are working in this field. So you could analyze this figure that these people must be coming out from various colleges of the country, and they are finding a greater or a wider scope in the field of online gaming. Right now, the data says that we are doing just 1% of the global business in online gaming, in which China is number one with more than 25% of online gaming business across the world. And United States of America is number two with 23% of market share. And we are just 1% of the global business, whatever that happens in this particular business of online gaming. Yeah, this is true that for the last 2-3 years there was an increment of mobile users in terms of the number of people who play the online games. There are around 450 million people right now in our country who are playing online games. And these 450 million people, which categorically been decided in 2021, is nothing but 1% of the total people who are playing this online game. And that is the reason why the government feels that if there are 3 unicorns and all of them were in the state of startups when they started their business into this field, and right now they are unicorns. So out of this understanding, the conclusion is that we can create lot of unicorns in this business. The digital market of online business can create many unicorns. So the government cannot be very stringent in coming out with laws that could be very much difficult to adhere to by these companies and so on. So in one of the interviews, some of the business capitalists, some of the venture capitalists, they have shown their concern that we're waiting as to how the government is looking into this field. If the government is little soft, then I think more and more money is going to pump into this business. And if the government is going to become tough into this business, then many venture capitalists are going to leave this. And the government thinks that the idea of getting into the digital economy, creating a digital economy for the country and creating a name for the country, for the world, to exhibit that we are one of the greatest economy in the digital world, this particular field is going to give lot of push. आपको पता है ना कि हम लोग रोज न्यूज़पेपर में ये पढ़ते हैं, इनफैक्ट देखते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से कौन है नंबर 1, कौन है नंबर 2, कौन है नंबर 3. आपको पता है इनको आप गौर से देखो, यू सी देम. आप ज्यादा नहीं, आप टॉप 20 देखो, आपको दिखेगा इन टॉप 20 में से कितना उतार चढ़ाव होता है. यू विल फाइंड दैट दिस 20 पीपल इन द top line, from the top line to the 20% of this line, you will find out that they are moving up and down very fast. Now to maintain the top slot in the world is going to be very tough. मुझे याद है हम लोग बिल गेट्स के बारे में पढ़ते थे सॉरी, और उनके नाम के बारे में हर न्यूज़पेपर में पढ़ा होता था. धीरे धीरे वो नाम चला गया, अमेजोन आया, अमेजोन का नाम आने लगा, अमेजोन का नाम हमने सुना, उसके बाद अब देखो एलन मस्क आ गया. सो दिस आर मूविंग हियर एंड देयर, कुछ समय बाद ये भी चले जाएंगे. नाउ यू कैन इमेजिन द अमाउंट ऑफ बिजनेस that somebody could make into this if taken this particular field very seriously and if the government has a very positive approach about it. So recently the Ministry of Electronics and IT Department had constituted a small group, and the purpose of this group is to figure it out as to how the laws or the regulations could be drafted, because right now we have no idea what are the loopholes in this field and what kind of laws we think that could be basically going to serve the purpose of these people and also at the same time can give justice to the legal system as well. So right now we have no proper idea as to how the laws are going to be framed. तो अभी थोड़ा सा हमने क्या किया है, the government of India has made a regulatory body. It is a self regulatory body, उसको कोई देखने वाला नहीं है, ठीक है. मतलब एक ग्रुप को बना दिया कि आपको देखना है. दैट मीन्स दे नीड नॉट टू रिपोर्ट टू समबडी, और देयर इज नो स्टैट्यूटरी बॉडी राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. तो वो जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है वो देखेगी, एंड दिस सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी इज गोइंग टू डिसाइड हाउ द लॉस कुड बी फ्रेम्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. तो अभी इनका पर्पस सिर्फ इतना है कि जो इसमें गेम में खेलने के लिए आ रहे, मोस्टली द पीपल आर गोइंग टू प्ले दिस गेम्स,
उनको जानना हु दोज पीपल आर, तो नो योर कस्टमर। एंड सेकेंड, उसके अंदर जो भी ग्रीवेंसेज आते हैं, किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, टू टैकल दोज, इनफैक्ट टू मेक ए चार्ट ऑफ दोज grievances. So based on that grievances, they are able to frame out proper laws and regulations. बाद में, तो right now they are not able to frame it out कि क्या बनाएंगे, तो proper grievances को जब जानेंगे, then we are able to make laws based on that. आपको पता है कि हमारे देश में gambling is not allowed. I mean, it's not legal. मतलब सारे स्पोर्ट्स जो गैम्बल से रिलेट करते हैं या बेटिंग से रिलेट करते हैं, they are absolutely illegal. And you will be surprised to know that the subject matter of any sports related to this gambling and sports of chance is absolutely framed by the states. Means the state has the authority to make laws based on that. और अभी क्या है ना, सारे स्टेट का अपना अपना तरीका होता है लॉज बनाने का, तो यू कैन नॉट इंटरफेयर इन दैट. तो एवरी स्टेट हैज बीन एम्पावर्ड टू मेक लॉज ऑन दीज सब्जेक्ट्स. आपको याद है ना, पहले हम लोग मतलब गेम के बारे में सोचते थे तो वो सारा फिजिकल गेम होता था, चाहे वो क्रिकेट हो या फुटबॉल हो, टेबल टेनिस हो, लॉन टेनिस हो, इवन चेस भी होता है, तो भी हम फिजिकल सोचते थे. आज हम सब लोग उसको ऑनलाइन खेलते हैं. तो सबको लगता है कि ऑनलाइन जो गेम होता है वो गेम ऑफ चांस होता है. मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक्स अबाउट एन ऑनलाइन गेम, सबसे चीज पहली चीज जो दिमाग में आती है वो ये आती है कि यार ऑनलाइन गेम है यार, ये तो चांस वाला गेम है यार, ये तो बेटिंग जैसा कुछ है. बिकॉज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गेम्स, समबडी हैज टू प्ले 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स. कौन से गेम्स पता है आपको? फ्री टू प्ले, 3 प्रकार की गेम होते हैं. फ्री टू प्ले, पे टू प्ले, और तीसरा होता है पे टू अर्न. ये 3 प्रकार के गेम्स में ये 3 बेसिक चीजें होती हैं. आप तीनों में से कोई भी अप्रोच कर सकते हो. या तो आप फ्री वाले गेम्स खेल रहे हो, या तो आप ये सेकंड वाला प्ले नहीं है, सेकंड वाला पे टू प्ले, आप पे करते हो उसके बाद आप खेलते हो. मतलब बिना पैसा पे किए आप खेल नहीं सकते. कुछ गेम्स ऐसे हैं कि आपको पे करना पड़ता है, तो आप पे करोगे तभी आप खेल पाओगे, पे नहीं करोगे तो आप खेल नहीं सकते हो. तो पे टू प्ले. और तीसरा पे टू अर्न. तो जब मैंने पे टू अर्न पढ़ा ना, तो मेरे को लगा कि यार ये तो बड़ा गजब का कॉन्सेप्ट है. बिकॉज आई कैन टेल यू दैट द इंस्टीट्यूशंस, आई मीन कॉलेजेस वगैरह जो है ना, they can frame out certain courses, yeah, and in that courses they can make people learn as to how somebody can play and earn, because it is going to create an employability. अभी आज देखो ना, today in this 21st century we are looking forward to IPLs. अब IPL में क्या हो गया, क्लब जैसे ही है वो. बेसिकली एक टीम ने प्लेयर्स को हायर कर लिया, isn't it, and these players are playing for that team, isn't it, and the team is earning a lot of money out of it, maybe through advertisement, through different ventures, maybe through associations, या वो गेम को जीत कर you are able to earn lot of money. So मुझे ऐसा लगता है in the time to come, because of this concept, I mean the online gaming concept that is coming up right now at this moment of time, मुझे लगता है आने वाले टाइम में there would be people who are into gaming business and they would hire people. मतलब कंपनीज हायर करेंगी लोगों को टू प्ले दी ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन गेम्स, एंड दे वुड बी हायर्ड, ठीक है ना, द वे एज इफ समबडी इज गोइंग टू गेट एन एम्प्लॉयमेंट. कि भाई साल भर के लिए 6 महीने के लिए आपको हम हायर कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा खेलते हो, तो वी वांट यू टू प्ले फॉर आवर कंपनी एंड अर्न मनी फॉर अस, एंड विल गिव यू दिस मच अमाउंट ऑफ सैलरी और दिस मच अमाउंट ऑफ कट और दिस मच अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन एंड सो ऑन. सो देयर इज अ वाइडर स्कोप टू व्हाट आई एम टॉकिंग राइट नाउ एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम. अभी छोटा छोटा दिख रहा है ये, पर आने वाले टाइम पे बहुत जम के शेप होने वाला है. अच्छा, यदि आप कहते हो कि सर स्पोर्ट्स के इसमें लिमिटेशन से, कोई लिमिटेशन नहीं है. जो स्पोर्ट्स आप फिजिकल देख सकते हो वो स्पोर्ट्स आप इसमें कर सकते हो, बशर्ते ऑनलाइन गेमिंग के अंदर केवल और केवल वही गेम लीगल है जिसमें चांस का खेल नहीं है, एंड ऑल द गेम्स दैट आर एसोसिएटेड विद सर्टेन अमाउंट ऑफ स्किल्स. स्किल किसी भी प्रकार का हो सकता है. यहां पर तो इंटेलेक्चुअल स्किल होगा. जैसे आप देखो हॉर्स रेसिंग है, हॉर्स रेसिंग में क्या होता था, 2 प्रकार की स्किल चाहिए उसमें. एक तो जॉकी घोड़े को कैसे दौड़ाएगा, घोड़े की हेल्थ कैसी है, घोड़ा कितना दौड़ सकता है, घोड़े का स्टेमिना कैसा है, घोड़े को कैसे ट्रेन किया आपने. सो ऑल दो स्किल्स पुट टुगेदर, सम टोटल ऑफ ऑल दो स्किल्स आर गोइंग टू मेक द विन फॉर द जॉकी. बोट रेस, मैंने केरला में बोट रेस देखा, माई गॉड इतना फास्ट चलता है यार बोट, मतलब साइकिल की तरह चलता है, इतना तेज चलता है पानी में. जब वो 15-20 लोग जब उस बोट को आगे लेके जाते हैं ना, आई हैव सीन दैट, माय गॉड इट्स सो फास्ट.
इतना ताकत लगता है, आम ताकत, आर्म्स का पूरा ताकत उसमें लगता है. तो दैट इज अ टाइप ऑफ स्किल. देर इज नो चांस एट ऑल. सो इफ यू आर नॉट स्किलफुल यू कैन नॉट विन दोस गेम्स. तो अब उसको आपको रेप्लीकेट करना है किसमें, ऑनलाइन गेमिंग में. तो देर आर लॉट मेनी टाइप ऑफ एक तो स्ट्रेटेजी वाले गेम्स आपने देखा होगा, उसमें बंदूक लेके आप गोली मारते हो सबको इधर उधर, बच्चे खेलते. देर आर सो मेनी पीपल हु आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू सच गेम्स. उसके भी बिल्कुल ऑब्जर्वेशन फोकस कितना चाहिए आपको. यू डू नॉट नो कि कौन कहां पर खड़ा हुआ है. बेस्ड ऑन हाउ यू मूव पूरा का पूरा गेम का स्ट्रेटेजी चेंज होता है. एंड यू नीड टू वेरी फास्ट इन इनकॉर्पोरेटिंग दैट चेंज एंड एट द सेम टाइम अप्लाइंग योर माइंड टू दैट. फैंटेसी गेम्स में आपने देखा है, कोई गेम ले लो, आप फुटबॉल ले लेते हैं ऑनलाइन गेम में. अब फुटबॉल में आप किसी भी प्लेयर्स को ले लेते हो. ऐसा मतलब ये नहीं कि आपने मेसी को ले लिया, रोनाल्डो को ले लिया या एम्बापे को ले लिया तो आप जीत जाओगे. इट्स नॉट लाइक दैट. उसको इस प्रकार से बनाया गया है कि उनकी जो एक्चुअल रेटिंग है इन द वर्ल्ड, और अभी उन्होंने जिस स्पोर्ट्स को खेला है, जिस गेम को खेला है, जिस क्लब के साथ कोई मैच खेला है, उसमें जिस प्रकार से खेला है वो सारा एड ऑन होगा. ठीक है ना. तो आपको ये ट्रैक करना पड़ेगा हाउ दिस प्लेयर्स आर एक्चुअली प्लेइंग इन द रियल वर्ल्ड. ओनली देन यू आर एबल टू फिगर इट आउट एज टू हाउ द वर्चुअल गेम इज गोइंग टू बी. तो आपको कितना इंटेलेक्चुअल कैलिबर चाहिए इन ऑर्डर टू ट्रेस ईच एंड एवरी मूव ऑफ सच प्लेयर्स. तो फैंटेसी गेम में भी आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती है कि ये सारे गेम स्किल बेस्ड है. इनफैक्ट इन सुप्रीम कोर्ट, इनफैक्ट इन वेरियस कोर्ट्स इन अवर कंट्री, हाई कोर्ट खास करके, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कई गेमों को गेम ऑफ स्किल बता दिया है. वो आप किसी भी प्रकार से गेम ऑफ चांस नहीं. जैसे लोग जब भी कार्ड्स लेकर खेलते थे, मुझे भी याद है, आई यूज्ड टू प्ले विथ कार्ड्स, और मेरे पापा मेरे को रोक देते थे कि दिस इज बैड, नहीं खेलना है इसको. बट टुडे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई कुड रियलाइज दिस फैक्ट दैट गेम ऑफ कार्ड्स इज नॉट ए गेम ऑफ चांस, इट्स अ गेम ऑफ ए स्किल. 3 पत्ती इज गेम ऑफ स्किल. आपको क्या पता सामने वाले बंदे ने कौन सा पत्ता चलाया, देखने के बाद आपको पता चल रहा है कि ये पत्ता चलाए. अब उसके पास कौन सा वाला पत्ता है, कार्ड है, दैट यू कुड कैलकुलेट बेस्ड ऑन द अदर कार्ड्स which are not taken. When 4 people are playing cards, some people are putting the cards, so keeping that, measuring that, keeping an eye on that कि कौन कौन से पत्ता ऑलरेडी लग चुका है. Now you are able to create this fact कि अच्छा है अब बादशाह नहीं जा सकता because बादशाह is completely exhausted. So to keep a proper memory on that and to analyze each and every circumstances, you are able to put your card. So it is no longer a game of chance at all, it's a game of skill. अब लूडो ले लो, आप सांप सीढ़ी खेलते हो आप, इट्स ए गेम ऑफ चांस ओनली. यार आपने ऐसे करके लूडो को उठाया और आपने डाइस फेंका, जो उसमें आया दैट इज हाउ यू हैव टू प्ले. तो इसमें आप कह सकते हो कि सर आप कोई स्किल तो लगा नहीं रहे हो, आपको थोड़ी पता कि 2 बार ऐसे झटका दोगे गुट्टी को तो वो कुछ और आएगा, 3 बार झटका दोगे तो कुछ और आएगा. कैन यू से दैट? यू कैनॉट इमेजिन कि कौन से झटके में कौन सा गुट्टी आएगा. तो डेफिनेटली इट्स ए गेम ऑफ चांस. तो आप लूडो खेल लो, गेम ऑफ चांस. आप सांप सीढ़ी खेल लो, गेम ऑफ चांस. तो वो नहीं हो रहा है यहाँ पर. जैसे कैरम बोर्ड में आपको चाहिए भाई हाथ का स्किल है, उंगली का स्किल है, एंगल का गेम है, कितना स्पीड से मारा आपने, कितना कैलकुलेट किया आपने, कहां जाके गोटी को लगाया, कैरम के किस एज पे लगेगा ताकि आप गोटी को प्रॉपरली डाल सकते हो. सो ऑल दिस थिंग्स हैव टू बी कैलकुलेटेड. यू नीड टू प्ले एंड क्रिएट एन एक्सपर्टीज ऑन इट, ओनली देन यू आर एबल टू प्ले इट बेटर, अदरवाइज नॉट. तो सच गेम्स आर कॉल्ड एज गेम ऑफ स्किल्स. तो सुप्रीम कोर्ट ने, बिलीव मी दिस फैक्ट, यू कैन रीड इट आउट ऑल्सो, कि बहुत सारे गेम, चाहे वो 3 पत्ती हो, चाहे वो रमी हो, ठीक है, चाहे वो कार्ड्स के गेम्स हो, ड्रीम 11, इस तरह के सारे गेम्स को दे हैव डिक्लेयर्ड टू बी गेम ऑफ स्किल्स. सो इट हैज ओपन द एवेन्यू फॉर द प्लेयर्स हु कुड क्रिएट बेस्ट ऑफ द बिजनेसेस इन द ऑनलाइन वर्ल्ड एंड पीपल कुड प्ले सच गेम्स. और इन सारे गेम्स को खेलने के लिए यू हैव टू पे सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी. और टैक्सेबल भी है. गवर्नमेंट इज कलेक्टिंग अराउंड 28 to 30% ऑफ टैक्स इन दैट. And these companies are writing to the government, to the IT department, that we expect you to cut only 18% of GST on that. Please, हमारे लिए कुछ करिए. तो अभी इसमें शेप अप होने में काफी टाइम है. The government is right now taking it as a pilot project and to see how the grievances are going to come. जैसे जैसे grievances आएंगे उनको देखकर हम rules और regulations और laws को बनाने में हमें मदद मिलेगी and we'll be able to frame a better law for this particular field. और चूंकि स्टेट के अपने अपने लॉज हैं, स्टेट के हर लॉज अलग है. आप ये कह नहीं सकते हो सर इस स्टेट में कोई पर्टिकुलर लॉ चल रहा है तो दूसरे स्टेट में वही लॉ चलेगा. ओके, सो सारे स्टेट के लिए अपने आप में एक लर्निंग है दैट विल गोइंग टू सी हाउ द सेंट्रल इज गोइंग टू टैकल दिस सिचुएशन, एंड बेस्ड ऑन दैट द स्टेट
सारे स्टेट एक हारमोनी की सिचुएशन में आ सकते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट द स्टेट्स at a different point of time can create that these kind of sports are legal in our state and these kinds of sports are not legal in our state and so on. तो हर स्टेट के अपने अपने रूल्स होने के कारण राइट नाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज पुटिंग दिस as a pilot project, and maybe all those states are going to see it. Around the successful completion of this particular decision, the states are going to implement more and more, sports to get implemented in the state and people may play and so on. तो इससे काफ़ी अच्छा बिजनेस हो सकता है, and we can create lot of digital output, digital revenue, ठीक है ना, in this particular field, and the government can touch that target of touching $1 trillion of digital economy, जिसके पीछे आज आप देख सकते हो that everybody is running after. मुझे लगता है आने वाले टाइम पे, in the time to come, मतलब आप देखो ना, मतलब हर चीज डिजिटल होता जा रहा है, एवरीथिंग इज डिजिटली प्रेजेंट. मीन्स आवर प्रेजेंस कैनॉट बी फेल्ट फिजिकल समटाइम्स बिकॉज द डिजिटल प्रेजेंस हैज टेकन over it, and it has taken over it in such a manner that you have to be practically present in the digital world. If you're not present in the digital world, it is practically impossible to find it out in the physical world. ऐसा हो गया. So all those sports that are played outside are now played on a cell phone. In India, more than 80 to 85% of people are using these cell phones, and all those games are actually made with the concept or the softwares which could be properly run on a cell phone. So everything is available on a cell phone. तो ऐसे करके चीज़ों को जो है आप देख रहे हो कि बनाए जा रहे हैं, एंड दिस आर दी 3 द मोस्ट सक्सेसफुल स्टार्टअप्स इन द फील्ड ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिजनेस. और जैसे मैंने आपको बताया ना कि मोबाइल एंड इंटरनेट एसोसिएशन वाले इस बात को कह चुके हैं कि सर इन्वेस्टर्स लोग तो वेट कर रहे हैं, हम पैसा लगाना चाहते हैं, गवर्नमेंट का रवैया क्या है हमें जानना है. यदि गवर्नमेंट सॉफ्ट है पैसा लगाएंगे. एंड नॉट ओनली दैट, देर आर thousands and thousands of developers are waiting. There are almost 800 to 1000 startups are waiting कि हम भी आएंगे इस बिजनेस में, बट हमारे पास उतना ही पैसा है जिसमें हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते. We can only play short shots. And since the government right now at this point of time is coming out with this idea of startups, we cannot just do one experiment. It is a hardcore plan that if the government is becoming softened to this, we'll definitely get into this business. So in the time to come, lot of revenues and of course lot of employment is going to arise in this particular field, and you will see a lot of changes coming up in this field. So right now, as of now, the government is still waiting to make certain laws, regulations, frameworks based upon the grievances that they receive in the time to come, and maybe over a period of time we will find a lot of things coming up in the form of law in this field. Because in 2021 we have already have done a business of $2.2 billion. And it is expected that by 2025 and 26, this business will go to around $7 to $8 billion. So you can understand that if government doesn't do anything on this, still we are able to make a growth. And if government becomes little softened to this, the amount of growth that we can attain is huge, tremendous, right? So this idea that I have given you, or the concept that I have given you, could be taken up as a concept, and you can expect a legal reasoning paragraph upon which 4 to 5 questions can be placed. Not only this, I can say that a question on logical reasoning can also be made a passage, and based upon you can have 5 to 7 questions based upon it. So I am expecting you to have this particular sessions, this particular topic to be properly taken. If possible, get into some more information through internet and other resources, and can expect similar kind of thing in the paper to come in the section of legal reasoning and critical reasoning too. क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लॉ नहीं है, बहुत ज़्यादा लीगल जार्गन्स मैंने यूज़ नहीं किया, and this is a very fine-tuned topic to be a part of our course. So I'll be discussing a similar kind of things in the time to come on a daily issues of sessions. Hope you like it, and subscribe this channel. This would help you out in most of the learnings that could be a part of your paper in the time to come in 2024 and 2025 CLAT examinations also. We are Success at Education Services. We are open in online and offline programs as well. Whoever feel like, you can always be contacting us. And thank you so much. May God bless you. Have a great evening. Bye bye.